This is the admin block. It's an office area. This is your room? This is my room. Okay. I'm a student of learning ventilator for 25 years. Okay. This is the service center. Service center. This is inward warehouse. You get all the raw material here. That's a inward quality check. So all the material that comes into warehouse is first checked here on a piece-to-piece basis, then transferred to the QC past warehouse. So this is all the raw material which is passed by quality control. यहाँ साथ में अंदर जाते हैं ना. So this is assembly area. Okay. These are the mechanical assemblies. Mechanical part यहाँ पे assembled. So all the mechanical parts are assembled here. All the electronic parts are assembled over there. So this is a turbine, the pressure regulators. Okay. So this is half built machine. This is half built. It is half built. अभी उसका टेस्ट नहीं हुआ है. It's a half built machine. Okay. So after everything is done, it goes to here. It's a fully built machine now. He is calibrating this. It's calibrating. Okay. Then the machine comes on this bench. यहाँ पे क्वालिटी चेक होता है. The machine is run for minimum 24 to 48 hours. नई मशीन बना के 24 आवर्स बाद में 24 टू 48 आवर्स उसका एक बार फाइनल टेस्ट होता है. उसके बाद एजिंग होता है 24 आवर्स का. उसके बाद फाइनल क्वालिटी चेक होता है. ओके. ये क्या चीज़ है? So, ये मेटल का टेस्ट लेंगे कैलिब्रेटेड. ओके. जब आप हायर वॉल्यूम या हायर पीप चेक करना चाहते हो तो आप नॉर्मल टेस्ट लेंग पे नहीं कर सकते हो. So here when you are dialing 45 of the pip, you can test it here. If you are using this kind of test lung, you cannot test PWP of 45 or something, which is very high. Okay. Or a tidal volume of 2500 ml. You cannot test on these test lung. Okay. So these test lungs are used to test this kind of the high extreme values. Final quality check. Once final quality check is done, it goes to the warehouse. So this is the outward warehouse. Okay. So this is the finished goods storage. जो मशीन वहाँ पे कंप्लीट हो गए जी. वो यहाँ पे स्टोरेज में रहते हैं. ठीक है. पैक करने के लिए. And then it goes to packing. So this is how packing is done. This is the. This is for ventilators. For the ventilator packing stand is different. Stand is that box. Okay. So this is ventilator. Then you have the accessories. Okay. And then you have final packing of thermocol. It is ready to dispatch. It's ready to dispatch. Okay.
and then it goes on the loading. Okay. तो ये सारा मोल्डिंग ऐसे रेडी होके आता है मोल्डर से. सभी चेसी और मोल्ड है. ये कैबिनेट है. कैबिनेट है ये. ओके. तेरे को बैटरी देखने में इंटरेस्ट हो तो ये बैटरी है. ये बैटरी है. वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी. कितना बैकअप है? 1524 कितना देता है? 8 घंटा. 8 घंटे का बैकअप. This is the meeting room. This is meeting room. Okay. This is the final product. This is the final product. It is turbine based. It's a turbine based ventilator. Okay. Can you explain little demo, quick demo, please? So first when you start it comes onto this screen. Okay. It is trying to Is make it adult easy. or- It's an adult pediatric neonatal Universal. full universal ventilator Okay. with a lot of varieties of the modes, invasive, non-invasive, and O2 therapy, which is HFNC. Okay. So you can select the new patient, adult, invasive or non-invasive, which way you want to go. You can select the mode you want. How many modes are there? There are 10 modes. 10 modes. So you can have pressure control, assist control, pressure control, SIMV, volume control, assist control, volume control, SIMV, PRVC, SIMV, CPAP, MMV, APRV, and biphasic. Okay. You can set your parameters and you can start ventilation. इसमें एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या है आपके? कुछ आपने क्या स्पेशल इसमें दिया है जो और मशीन्स में नहीं? So बहुत सारे, जैसे एक कस्टमाइजेशन ऑफ द डिस्प्ले. ये आप पूरे डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हो आपके चॉइस ऑफ पैरामीटर सेट करके. मतलब जो भी डिजिटल वैल्यूज चाहिए वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और आप स्टोर कर सकते हो उसे. वेवफॉर्म फील्ड चाहिए या अनफील्ड चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो. डिफरेंस दिखाएंगे अनफिल करके कैसा है? सो राइट नाउ इट इज फील्ड. ओके. इफ यू आर डूइंग लाइन 1, so this is now line 1. Okay. It's not filled. Okay. आप वेवफॉर्म को पॉज कर सकते हो, मेजरमेंट्स कर सकते हो. Okay. लूप्स है. सो 3 वेवफॉर्म थे वहाँ पे, यहाँ पे 3 लूप्स है. वापस आप उसको भी पॉज करके मेजरमेंट्स कर सकते हो. Okay. If somebody is highly interested in more of the graphics, then you have all the waveforms and all the loops on one display with basic parameters. Okay. And you have total values. So there are 32 parameters being monitored, Okay. which are patient parameters. The various, but importantly you get static compliance, inspiratory resistance, etc. on a breath by breath basis. Okay. In fact, you get time constant inspiratory and time constant expiratory, RC inspiratory and RC expiratory also on a breath by breath basis. Okay. Apart of that, of course you have alarms, which is easy. You can set with that, or you can do auto set, which automatically sets the alarm. Okay. You have trends and logs, the trends of last 96 hours. Importantly, the unique things here, you have trend, and when you press the trend, it shows you what were the mode being used that time, what were the settings, and what were the alarm limits that time. Okay. Everything is exportable Okay. on a normal pen drive. Okay. You don't need any proprietary software to open it or take the printout. Okay. There's event logs where
you log last 1000 events. Okay. Also it shows what were the changes done during the events. Again it is exportable, same way, no proprietary software required. You can take snapshot of anything. Okay. You can also see the snapshot and you can export the snapshot. Okay. This is unique because very few ventilator has this, and useful for of course medical legal points and academic purpose as well. ओके। वारंटी कितना दे रहे हैं आप इसमें? 2 साल का वारंटी है 2 साल की वारंटी कंप्लीट मशीन पे? कंप्लीट मशीन पे, एक्सेप्ट फॉर द कंज्यूमेबल्स कंज्यूमेबल्स लाइक दिस फ्लो सेंसर ओके और ऑक्सीजन सेंसर विच इज galvanic. ओके। व्हाट अबाउट बैटरी? Battery is under warranty. अंडर वारंटी फॉर 2 years. ओके। Apart of that, you have some of the unique things like you can configure O2 flush suction support in terms of FiO2 and in terms of time. Okay. You can feed in the oxygen input purity, particularly useful when you are using oxygen plants, which is not 100% oxygen purity. Okay. Then the machine will calibrate its system with the purity that you are fixing, that you are dialing. Okay. The flow sensor you can use either digital or even proximity here. One of the most important thing is if there is a damage to the touch screen, Okay. you can still use the entire machine by encoder. Okay. हाँ? ना टच स्क्रीन खराब हो जाए तो रोटेशन तो रोटेशन से इसको ऑपरेट कर सकते हो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप पीछे एक USB माउस लगा सकते हो। पीछे दिखाइए जरा। पीछे आपका USB पोर्ट है, वहाँ पे आप एक USB माउस लगा सकते हो। ओके। ये अच्छा फीचर है। और ये पूरा मशीन आप उससे ऑपरेट कर सकते हो। माउस। थैंक यू। थैंक यू। आपने कब से ये स्टार्ट किया है, कब से आप बना रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग? जी। We started in 2020. 2020. So August 2020 we launched it. Okay. The project started pretty early, like we started manufacturing project in 2018 Okay. and we launched the project on 2020. So the first machine was rolled out in August 2020. तो अभी तक कितना मशीन्स आप मतलब सेल? अभी तक 200 प्लस हो गए। 200 प्लस मशीन्स आप सेल कर चुके हैं? राइट। इंडिया में? इंडिया में। वो वारंटी इसका 2 साल है कंप्लीट? वारंटी 2 साल है कंप्लीट। यहाँ पे अभी कितना सर्विस बैकअप कैसा है आपका? सर्विस कैसे? सर्विस बैकअप हमारे उधर फैक्ट्री ट्रेंड इंजीनियर्स है, और इसके अलावा हम जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, उसके सर्विस इंजीनियर्स, उसके इंजीनियर्स को ट्रेन करते हैं। सो इफ़ वी लुक एट द एक्यूमुलेटेड फोर्स, इट इज़ मोर देन 45 इंजीनियर्स ट्रेन्ड बाय अस पैन इंडिया। तो इसका स्पेयर पार्ट्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बेनिफिट है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का। सो एवरीथिंग राइट एट द फैक्ट्री विच इज़ इन इंडिया, you can order and you can get it very soon. Certifications क्या क्या हैं आपके पास? Well, this is the first Indian product which is classically certified by many test reports. So we are IEC 60601-1 certified, IEC 60601-1-2, we are ISO 8060-602-2-12, we are ISO 13485 registered company. And C is already applied. I think we should get a C report and certificate by the next